What is the definition of a rogue state? If you do not know about it, let me share it with you. A rogue state is a state that is regarded to have broken international law, that poses a threat to the security of other nations, that is repressive within, aggressive outwards towards its neighbors, supports and sponsors terrorism, has WMDs, that is the weapons of mass destructions, and is a threat to world peace. Now, मैं चाहता हूं कि मैं ये rogue state की definition जो है एक भारी दिल के साथ, yes, with a heavy heart, I want to use this definition and मैं देखना चाहता हूं कि मैं अगर इंडिया के ऊपर इसको अप्लाई करूं तो मैं कौन से बॉक्सेस हैं जिनको मैं टिक मार्क कर सकता हूं. I do not want to do it because I'm not one of those जो कि बस खड़े होके मतलब नफरतें फैलाएं और कहें तुम गलत मैं गलत. I'm not one of those. I don't want that because I believe that there is good within every individual. I believe कि हर मुल्क के अंदर yes वहाँ पे पॉलिसीज आ सकती हैं, वहाँ की हुकूमतें आ सकती हैं, वहाँ पे बीजेपी जैसे लोग रूल कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो नेशनल्स होते हैं देयर इज गुड विद इन देम. So it is with a heavy heart that I am doing this, but let me just do that. Has India broken any international law? Have they posed a threat to the security of other nations? Again मैं वही repeat कर रहा हूँ and boxes को tick करना की कोशिश कर रहा हूँ because I know कि ये almost सारे boxes में tick होते हैं. अब इसका background अगर मैं आपको दूँ तो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि 9th को एक इंडिया की तरफ से एक मिसाइल आ जाता है हमारे पास, एक सुपरसोनिक हाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो कि एक्सीडेंटली वहां से चल पड़ा. मतलब कि यार कोई आई डिड नॉट डू अ शो ऑन इट बिकॉज मुझे इतनी अजीब पैथेटिक सी एक्सप्लेनेशन लगी कि आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि यार क्या बात कर रहे हो. यू लिव इन अ न्यूक्लियर वर्ल्ड माय डियर नेबर्स, यू लिव इन अ न्यूक्लियर वर्ल्ड, देयर आर नो मिस्टेक्स हियर. अ मिस्टेक विल मीन द डेथ ऑफ यू, डेथ ऑफ मिलियंस. 50 मिलियन का फिगर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. डू यू वांट कि हम तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाएं बिकॉज अ मिस्टेक, एन एक्सीडेंट सच एज व्हाट यू मेड, इट वुड इवेंचुअली हैव लेड टू दैट. एक और मैं आपको फिर मैं कहता हूं एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं ना, तो मैं एक और आपको देता हूं. द यूज ऑफ पैलेट गन्स. यू यूज पैलेट गन्स इन कश्मीर, और कश्मीर का अलग मेरे पास डिबेट है बिकॉज जब मैं इसको जो रोग स्टेट की जो डेफिनेशन है जब मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो उसमें मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट कश्मीर का भी है, द इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर. बट उससे पहले मैं एक एक्सप्लेनेशंस की बात कर रहा हूं. तो व्हेन यू यूज्ड पैलेट गन्स इन कश्मीर, व्हाट वाज द स्टेटमेंट दैट केम आउट? द डिजीज्ड जनरल बिपिन रावत, I don't want to comment anything else since he's not here anymore, but he gave a very funny explanation on the use of pellet guns during the time when he was alive. He said most of the eye injuries were caused because those pelting stones bent to the ground to pick up stones, and because pellet guns were being fired at their legs, they hit them in the eyes. वो कहते हैं कि हम तो टांगों पे मार रहे थे लेकिन वो आंखों में इसलिए लगती थी बिकॉज वो कश्मीरी जब पत्थर उठाने जमीन पे झुकते थे तो वो उनकी आंखों में लग जाती थी. अब सिंस ही इज नॉट अलाइव तो मैं इसके ऊपर और डिबेट नहीं करूंगा, बट यू गॉट द पॉइंट राइट. मसला पता कहां पे हुआ इंडिया को लेके? इंडिया का मसला हुआ बीजेपी रूल के साथ. नरेंद्र मोदी मतलब ही आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ ही इज अ रूलर इन इंडिया. इंडिया क्लेम्स टू बी द बिगेस्ट, द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, whereas the explanation is completely the opposite. The reality is completely the opposite, I should say. Researchers are of the view that India is leading to its own destruction. ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा रिसर्चर्स हैं जिसके बारे में कहा जाता है. वो कहते हैं जी जुडिशरी has bowed down to the ruling elite in India. Indian army is helping BJP for getting political mileage. India has become a rogue state under BJP rule. State power has been transferred to extremist and radical elements. All right. I don't know what else to say. This eventually sums up a lot of the stuff that I wanted to say. In 2021, there were 300 incidents of persecution of minorities that were registered in India.
in 2022, even till this date, the numbers are rising, and it is feared that by the end of this year, they would have multiplied by 2. US State Department की एक जो international religious freedom की report आई थी, that painted a very dark picture for the religious freedom for minorities in India. Hindutva policy, what is that all about? I mean, I don't know. It's madness, the one word that comes to mind, but disappointing. Indian writer Khushwant Singh, इनको जरा देखिएगा पढ़िएगा, he predicted the doom of India due to its self-destruction course. And finally, last but not the least, the president of the Genocide Watch, you must have heard about it because ये काफी ज़्यादा जब आई थी initially past में तो काफी highlight किया गया था. Dr. Gregory Stanton, he warned of an impending genocide of Muslims in India. So the question remains the same: is India on the path of self-destruction? Remains to be seen. Hopefully not.